जय हिंद दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग चौथे मैच का प्रीव्यू लेके आ चुके हैं, राजस्थान वर्सेस चेन्नई, स्टीव स्मिथ वर्सेस धोनी। और हम लोग का मैच इन्फो इस तरह का है। फर्स्टली वी विल सी पिच रिपोर्ट, देन ग्राउंड रिपोर्ट, देन हेड टू हेड बैटर्स, की बैटर्स टू वॉच आउट फॉर, CSK's probable 11, Rajasthan's probable 11, match prediction, who won the match, Dream 11, Grand League and Small League team, and key players and tips which you can win the match. So watch the video till the end for the key tips to win big in Dream 11. So let's start the video with pitch report. मेरे ख्याल से पिच बहुत ड्राई और हार्ड रहेगी। इस पिच में फास्ट बॉलर जैसे कि जोफ्रा आर्चर और एनगीडी जो हिट द डेक बॉलर होते हैं उनको मदद मिलने के ज़्यादा चांसेस, उनको बाउंस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दीपक चहर जो स्विंग करा सकते हो उस पे, और थोड़ी सेकेंड इनिंग में पिच थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो whom bowling second in this match, please pick that spinner. And ground report for this venue played in Sharjah Stadium. In this ground, first inning average score is 166 and second innings average score is 146. Means lots of matches are won by the first inning team. I'll give the list of 5 teams played on this ground. The team batting first won 10 matches, and the team bowling first has won 4 matches. T20I statistics: 14 matches are played here, 9 won by batting first and 4 won by the batting second team. Average score is 151 and scoring pattern below score 150 to 169. मेरे ख्याल से स्कोर 150 के नीचे रहेगा क्योंकि दोनों साइड की बैटिंग थोड़ी सी डाउन चल रही है। CSK की बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं गई थी पहले मैच में, और राजस्थान की बैटिंग भी मेरे को जॉस बटलर और बेन स्टोक्स के आने से कम हो गई है। Now head to head battle between Chennai and Rajasthan. CSK had an advantage here. They have played 21 matches. CSK won 14 matches and Rajasthan won 27 matches. And key battles to watch out for in this match is Deepak Chahar versus Yashasvi Jaiswal, Faf du Plessis versus Jofra Archer, Ambati Rayudu versus Shreyas Gopal, रॉबिन उथप्पा वर्सेस रवींद्र जडेजा। मेरे ख्याल से दीपक चहर और यशस्वी जायसवाल की बैटल बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग कराएंगे तो क्रॉस बैट खेलेंगे तो शायद जायसवाल आउट हो सकते हैं, और ही कैन बैट लाइक देवदत्त पडिक्कल. Faf du Plessis versus Jofra Archer. I think Jofra Archer has an edge on this because he takes the ball and pitch. Jofra has had a risk with bounce. Ambati Rayudu versus Shreyas Gopal. Ambati Rayudu has a not bad, but low record against leg spinners who are heighted bowlers. Robin Uthappa versus Ravindra Jadeja. Ravindra Jadeja can have edge on this because Ravindra Jadeja can bowl at the mid and can bowl Robin Uthappa out. So we'll come to the point and we'll talk about the probable 11s of both the teams. CSK's probable 11: Shane Watson, Murali Vijay, अंबती रायडू, फाफ डू प्लेसिस, केदार जाधव, MHD, जडेजा। मेरे ख्याल से सैम करन या ब्रावो में चेंज हो सकता है अगर ब्रावो फिट होंगे तो। दीपक चहर, पीयूष चावला, लुंगी एनगिडी आर द बॉलर्स। राजस्थान की प्रोबेबल 11 मेरे ख्याल से ये रहेगी क्योंकि जॉस बटलर और बेन स्टोक्स नहीं हैं, उनके जाने से मेरे ख्याल से इनकी प्रोबेबल 11 इस तरह की होगी। मनन वोरा एंड यशस्वी जायसवाल आर द 2 openers and Jason Roy also can be there.
रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडे और कार्तिक त्यागी, द स्पीडस्टर, जोफ्रा आर्चर and Jaydev Unadkat. Match prediction for this match: I think CSK win the match, but they can get some tough competition if Steve Smith and David Miller play his best innings. So we can go to the one CSK. I think so. And average score मेरे ख्याल से 140 to 150 के बीच में रहेगा. Dream 11 Grand League team. My punt players are Jofra Archer, Deepak Chahar, Shreyas Gopal and Piyush Chawla. So I'll go with this team because Ben Stokes and Jofra Archer are not playing in this match. My GL first team is Sanju Samson is my wicket keeper, Ambati Rayudu, Faf du Plessis, Uthappa, Steve Smith, Ravin Jadeja, Sam Curran, Riyan Parag, Lungi Ngidi, Shreyas Gopal, Jofra Archer. And the second team, MS Dhoni. In the first team, I'll pick Steve Smith and Jadeja as a captain and vice captain, respectively. And the second team, I'll pick MS Dhoni as my wicket keeper, Ambati Rayudu as my captain, Faf du Plessis, Steve Smith, Yashasvi Jaiswal, Ravin Jadeja as my vice captain. I'm pretty much sure Ravin Jadeja can pick 2 or 3 wickets or make some runs in the middle. Sam Curran, if played, or if he is not playing, then you can go to Devin Bravo because there is not a credit issue in this match. Then Riyan Parag, Lungi Ngidi, Shreyas Gopal, Jofra Archer. And my small league teams for Dream 11 are, I'll pick MS Dhoni and Sanju Samson both. Raidu as my vice captain because he is in terrific form in the first match. Faf du Plessis as a player. Steve Smith as my captain because he played spins very well. Ravin Jadeja, Riyan Parag is my punt player, but he can bat and bowl too, like spin. Piyush Chawla, Lungi Ngidi, Jaydev Unadkat, Jofra Archer are my bowlers. Sanju Samson and the second team, Sanju Samson is my wicket keeper because MSD's batting is going two down, or we can say he bats at number 5 or 6, and when we bat it's 3 or 4. So I pick Sanju Samson in the second match. Ambati Rayudu, Faf du Plessis as my captain, Ramanuj Thappa as my player, vice captain Steve Smith, Ravin Jadeja and Sam Curran are my all-rounders. Piyush Chawla, Deepak Chahar, Lungi Ngidi, Jofra Archer are my bowlers. की टिप्स इन दिस मैच मेरे ख्याल से पिच रिपोर्ट के मुताबिक और बेन स्टोक्स और जॉफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे हैं, तो जॉफ्रा आर्चर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर नहीं खेल रहे हैं, तो जॉफ्रा आर्चर और लूंगी एनडीडी आपके पंट प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि दे हिट द बॉल इन द पिच एंड दे कैन सम अमाउंट ऑफ सीम टर्न इन द ग्राउंड. Steve Smith can be a fantastic player because he plays spin very well. को ग्रिप बहुत पिच से ग्रिप मिलने के चांसेस हैं, थोड़ी ग्रिप मिलेगी पर मिलने के चांसेस हैं. पर लास्ट but not least, Jaydev Unadkat. His slower balls are terrific. His form is terrific. He is the highest wicket taker in the Ranji Trophy. He can generate some grip from his slower one and can. और जैसे कि कल नटराजन ने विराट कोहली को आउट करा था, वैसे ही. That's all from my side. Please guys, I want your support. Please share this video as much as can, and if you want team after the thought, then join my Telegram channel. Link is in description. Please support me guys. I want your support.